Good morning, children. So, once again, we are meeting in lecture number 12 of chapter 6. What is the title of the chapter? Effects of British rule in India. Right? Today we are supposed to go with page number 33, 34 and 35. Now see children, in last topic, that is called topic number 11, that is called lecture number 11. I told you about world history. I told you about the situation prevailing in India at that time of British rule. वैसे भी पहले भी हमारे हिंदुस्तान में जमींदारी सिस्टम थी, लेकिन अब जो जमींदारी सिस्टम है वो किसके कंट्रोल में आ गई? ब्रिटिश कंट्रोल में। तब जाके जमींदारी सिस्टम का पूरा इक्वेशन ही बदल दिया, क्योंकि ब्रिटिश को मिनिमम इतनी तो रेवेन्यू चाहिए ही, और उसके एडिशन में जमींदार अपनी रेवेन्यू ऐड करते थे। अगर दोनों की रेवेन्यू ऐड करो तो पीसेंट्स, बेचारा जो खेडूत है, उसको क्या बचता? कुछ नहीं बचता। वो मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था कि if he worked in his field for days and nights together under the hot sun for cultivation, right? Suppose he is growing corn of 100 rupees. I समझ में? He is growing corn of 100 rupees. Then almost 70 rupees is taken away by government. तो बचा क्या? उसकी 100 रुपीस की मेहनत के सामने उसको रिटर्न कितना मिला? तकरीबन 20-25 रुपया, 30 रुपया। और उसमें जो मनी लेंडर्स के पैसे लिए होते उसका इंटरेस्ट पे रखना, प्रिंसिपल अमाउंट करना, बाकी कुछ नहीं बचना था। सो इसीलिए दिन ब दिन पीसेंट्स की हालत खराब होती चली। है समझ में? उसकी हालत खराब होती चली और परिस्थिति ये हुई 5-25 साल में के बाद जो फार्मर्स एक समय बड़ी बड़ी जमीन के मालिक थे, वो सब जमीन बिक गए। वो बेचारे आज खेत मजदूर बन गए। The farmers turned into land laborers. Right? So, this was the condition of farmers of introduction. Now, we'll tell you a social effect of British rule. In this social effect, I am supposed to talk about two important things. जमींदारी सिस्टम को भी कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश people appointed one person to control these zamindars. And this person who controlled these zamindars for collection of revenue was called collector. He was called collector. And that is why word collector, अभी हम डिस्ट्रिक्ट हेड को क्या बोलते हैं? कलेक्टर बोलते हैं ना। वो डिस्ट्रिक्ट हेड का जो नाम है कलेक्टर, वो ब्रिटिश रूल में आया था। The person who was responsible for collecting revenue was called collector. And second point, उस वक्त there was no judiciary system. उस वक्त वकालत, कायदे कानून, कोर्ट, जजेस, ऐसे कुछ नहीं था हमारे हिंदुस्तान में। Because India is a cluster of villages. अभी भी आप देखो तो सच्चा हिंदुस्तान गांव में रहता है, सिटी में नहीं रहता। Still 63% of India lives in villages. Till today 37% of people of India lives in city. तो उस वक्त आप देखो सिटी नाम कोई जगह ही नहीं थी, पूरे हिंदुस्तान गांव में बटा हुआ था।
कायदा कानून थे। उस वक्त ये बखेड़ा जमेरा माता को कुछ नहीं थी। अगर मान लो एक गांव में कोई प्रॉब्लम हुआ तो हर एक गांव में एक सरपंच होते थे, and he was associated by two other 4 or 5 people, जिसको मुखिया वो सब बोलते हैं। 4 to 5 prominent people of that village used to connect all the business of a village. अगर दो परिवार के बीच कुछ झगड़ा हुआ, कोई प्रॉब्लम हुआ, तो पंचायत बुलाई जाती थी। उधर दोनों पार्टी अपनी अपनी बात कहते थे और उस दोनों को सुन के ये जो पंचायत थी 4-5 लोग की, वो अपना फैसला सुनाते। इसको भाई बोलते हैं कि बेटा तू ये कर, ये जाने दे चल। इसको बोलते हैं ये नहीं करने का, ये ही करने का, तू इतना जाने दे, बात खत्म, झगड़ा खत्म। ऑन स्पॉट जजमेंट आ गया, बात खत्म। वो कायदे कानून कोर्ट मुद्दा कुछ नहीं था, जैसे बात देख रहे। But replacing this system of British judiciary was introduced, जिसे आज सिस्टम बोलते हैं। System of British judiciary was introduced. Third, Gram Panchayat handled administration of entire village. These panchayats were the backbone of India. Gram Panchayats, right? Gram Panchayats. Gram Panchayats handled the administration of villages, right? Of villages. But now this system was taken over by British. मतलब अपना जो बेसिक फंडामेंटल ढांचा था हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता का, उस पे उन लोग ने अटैक किया। मतलब ग्राम पंचायत के सिस्टम को रिप्लेस करके जुडिशरी सिस्टम ले आए। So the orthodox minded people of that time, because education was not there at that time, so the orthodox minded people literally got feared. वो लोग खौफ में आ गए, डर में आ गए कि ब्रिटिश आर हियर टू डिस्ट्रॉय आवर कल्चर। जो हमारी सभ्यता है हजारों साल पुरानी, जो हमारी संस्कृति है सदियों पुरानी, उसको ये लोग खत्म कर नहीं पाए। Right? They wanted to destroy all these things, and that is why there was a great restlessness among the people. Why? Absence of education. उस वक्त आपको मालूम है hardly 1% लोग एजुकेटेड थे, hardly 1%. And if there is absence of education, obviously there is ignorance prevailing in society. I am not saying that 100% the changes made by British was against our system. It is not true. Take for example, out of 10 changes made, 7 changes may be against our society, but 3 must be favoring our society. But this also was not accepted. Why? Because absence of understanding. Because absence of understanding, there was ignorance prevailing in society, and because of this ignorance, whole fabric of society got disturbed. Understood? पूरा जो हमारा फैब्रिक था सोसाइटी का, वो मतलब डिस्टर्ब हो गया, राइट? 6
पंचायती राज नामक टॉपिक है, उस वक्त हम ग्राम पंचायत बोलते थे, बराबर। दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट perfectly perform their task. Understood? They perfectly perform this task. And finally, this system was in danger. उस पे खतरा मंडराने लगा। आया समझ में? The policy of social reforms by the company made the people feel insecure and suspicious. The policy made by the company made people insecure and suspicious शंकाशील बना दिया कि अब क्या होने वाला है, क्या होगा, राइट? The government, they felt that the government is trying to convert them into Christianity and destroy their Indian culture, right? They felt that the government wanted to destroy their culture. बराबर है? The government wanted to destroy their culture. So there was a suspect or a mistrust prevailing among the people. Not only this, the people who did not follow the rules and regulations made by British were strictly punished. They were liable for punishment. मान लो कि गांव में एक झगड़ा हुआ और वो पंचायत के हिसाब से अगर निपटाना चाहा और अगर ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव को मालूम पड़ा तो उस पर कोई सजा की कार्यवाही होती। क्यों? कि आपको ब्रिटिश जुडिशियरी सिस्टम के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे नहीं सॉल्व होगा। मतलब जबरदस्ती कई सारी चीजें थी वो अपने आप पे थोपना चाहते थे। And that is why we felt insecure कि ये क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता तो पूरे देश को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देंगे। और उस वक्त कन्वर्शन भी भले हिस्ट्री में नहीं लिखा है, हिस्ट्री में सारी जगह ऐसा ही लिखा है, these people came to trade with India. Along with trading, they started to convert the people into Christianity, which is called polycerization. जबरदस्ती जो कन्वर्जन होता है इसको क्या बोलते हैं? पोलिसराइजेशन। आया समझ में? और सबसे ज्यादा पोलिसराइजेशन की असर साउथ इंडिया में थी। क्यों? मैं आपको बताता हूं। क्योंकि इन साउथ इंडिया top people of that class, top 10 means general class, specifically Brahmins or Iyengar Brahmins, they dominated culture. They dominated very highly. So the backward class, the lower class of the society was ignored. बराबर? जिसको अछूत बोलते थे, untouchability prevailed. वो समय ऐसा था, ब्रिटिश, फ्रेंच, पोर्चुगीज जो भी आए और जैसे अपना पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट किया, उन लोगों ने सिस्टम स्टडी किया। Along with that, they also brought missionaries to India. अभी भी आप इतिहास पढ़ो, आपने ऐसे पढ़ा है पोर्चुगीज केम टू इंडिया, तो भी आज का सबसे बड़ा चर्च हिंदुस्तान में पोर्चुगीज का चर्च गोवा है, सेंट फ्रांसिस चर्च, जेवियर चर्च। अभी भी आज सेंट फ्रांसिस जेवियर की डेड
बॉडी नगर यात्रा पे निकालते हैं, बहुत बड़े संत थे। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, लेकिन जो पोलिसराइजेशन का धंधा था वो भी साइड बिजनेस बन गया था, जबरदस्ती कन्वर्जन करने का। तो इसके हिसाब से मान लो कोई श्यामजी भाई है, वो सैमुअल बन जाता था, बराबर है। कोई माया बहन है तो कोई मैरी बन जाता था। और ये जबरदस्ती का जो कन्वर्जन का धंधा था उसको ब्रिटिश की ओर से थोड़ा प्रोटेक्शन मिलता था। मतलब रिच क्लास, अपर क्लास विल नॉट हैरेस दिस पीपल, सो दे वर अट्रैक्टेड toward conversion of Christianity. Basically, Christianity is a European religion. How can they exist in India? अभी भी आप हिंदुस्तान में देख रहे हैं, साउथ इंडिया में, केरला में देखो, मैक्सिमम Christianity. If you see the history of their forefathers, they were converted Christians. Pure Christianity is from Europe. समझ में? तो ये भी धंधा साइड बाय साइड चल रहा है। And that is why people of that time were literally scared and felt insecure. कि क्या हो रहा है? जबरदस्ती कन्वर्जन का धंधा हो रहा है, जबरदस्ती अपना कल्चर छोड़ के वो कल्चर एक्सेप्ट करने की बात हो रही है, कई सारे प्रॉब्लम्स थे। So the social fabric was totally disrupted. That is my effects on social life. ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया क्या? Right? Now we'll switch over to next topic, destruction of Indian trade and commerce industries. Right? Destruction of Indian trade and industries. Destruction of Indian trade and इंडस्ट्रीज। गांव की हालत तो बदतर कर दी थी, अब उसका टारगेट अर्बन एरिया था। उस वक्त मैंने आपको बोला सिटी एरिया नहीं था, लेकिन थोड़े मोटे छोटे मोटे जो सिटी बोलते हैं, उस वक्त मुंबई था, सूरत था, कलकत्ता था, मैड्रास था, उस वक्त के सिटी एरिया थे। उसमें क्या हालत हुई? व्यापार है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। लेट अस सी द हैंडलूम ऑफ इंडिया supplied textile market to Europe and Asia. And the best thing, we are studying history, muslin of Dhaka. Best artist of Dhaka prepared muslin, which was exported to Europe. आज भी ढाका का मसलिन पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अभी तो ढाका बांग्लादेश में है, उस वक्त बांग्लादेश नहीं था, right? The traders from the Europe countries came to India and purchased goods. The Indian made jute, silk, woolen textile were in high demand in European markets, right? Indian goods like cotton, silk, muslin, jute, etc. were in great demand.
in Europe. In Europe. Were in great demand in Europe. As such, the Indian goods, the soft and delicate muslin of Dhaka, ये underline करना, अभी मैंने आपको बोला ना, ये वाला. The soft and delicate muslin of Dhaka was world famous. ऐसे बोला जाता है, मस्लिन का जो टाका आता है 5.5 मीटर का लंबा, वो पूरी टाका को आप निपट दो तो एक रिंग के हिसाब में वो पसार हो जाता है, एक रिंग में से पसार हो जाएगा. And if you fold them, right, it will be just fitted in the size of matchbox box. छोटी सी डिब्बी में वो पूरा टाका सिकुड़ के रह जाएगा. वो सब कारीगर उस वक्त अपने हाथों से बनाते थे. उस वक्त मशीनरी कहाँ थी? आज मशीनरी भी ऐसा कापड़ नहीं बना सकते. उस वक्त ऐसा कापड़ बनता था हिंदुस्तान में. I समझ. Apart from textile, commodities such as salt, pepper, sugar, etc. also were exported. Right? Commodities like salt, pepper, sugar, tea were also exported to Europe. Right? These all things were exported to Europe. Right? Which was trading, the exchange, whose work to currency, cleaning, the trade. This is an important line, you mark this line. Huh? It may be asked in blank. The trade, transaction, was made in bullion, right? मतलब gold and silver, right? You are supposed to pay in gold or silver, then you get these things, because there was no international currency. उस वक्त पाउंड या रुपया ऐसा होता था. इंडिया वॉज फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉल एंड बिग किंगडम्स, और हर एक किंगडम्स की अलग अलग करेंसी थी. सेंट्रल इंडिया में कोई दूसरी करेंसी होती है, नॉर्थ इंडिया में कोई दूसरी करेंसी होती है, तो कौन सी करेंसी एक्सेप्ट करें? सो दे मेड अ यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग, कैन नॉट ट्रेड इन गोल्ड एंड सिल्वर, यूनिवर्सल करेंसी बन गई. अंडरस्टूड? तो मान लो यह सब जो व्यापार होता था तो उसमें कितना मुनाफा ये लोग के आने के पहले होता होगा, बिकॉज unimaginable amount of bullion was collected in India, and that is why you have seen, you study the history. At that time, kings used to donate lavishly in temples. You study number of temples, huge donations of gold and silver, and you have studied all these forts and these all things, big structures of ancient India. Right? Because income was generated in gold and silver. And as you know, India dominated world trade. उन लोगों को हमारी जरूरत थी. So इसीलिए इतना बड़ा व्यापार होता था. लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो सिंक होने लगा. ऐसा कुछ नहीं. Commodities were traded or exported in exchange of gold or silver. जिसे हम bullion बोलते हैं, right? Still my answer is not complete.
scenario changed after the British rule. Everything got a change. Right? The trade and commerce, which was controlled by local people, by local traders at one time, now it was taken over by British traders. That means East India Company. Right? The flow of bullion got reversed. पहले क्या था? यूरोप में से गोल्ड और सिल्वर हिंदुस्तान आता था. अभी उल्टा हो गया. Now the flow of gold and bullion, this gold and silver, started to flow from India towards Europe. ऐसा समझ में? और लेक्चर 11 में मैंने आपको बताया था, उसी समय approximately in 1830, industrial revolution took place in Europe. So the labor was replaced by machines because they were in need of massive production, not huge, massive production because of colonies, abundant raw material, ready-made market, all these things were in their hand. So man was replaced by machines. And in order to run their factories days and nights, they started to loot the colonies. Right? From loot, they became greedy. From greed, that greed turned into lust. जैसे आपको मालूम है, लालच का तुरंत ही नहीं होता. जैसा जैसा आता गया, वैसे वैसे लालच बढ़ती गई. और यही लालच में अच्छे बुरे सब काम होने लगे. ऐसा कुछ नहीं. In the beginning of Industrial Revolution, the British took away 500 crore rupees as per today's standard only from Bengal that year, in 1 year. आज के हिसाब से गोल्ड और बुलियन की कीमत अप्रोक्सीमेटली 500 करोड़ पर ईयर की थी. तो आप मान लो आप बक्सर पढ़े हो 1764, फर्स्ट यूनिट आप पढ़े 1857, अप्रोक्सीमेटली 100 इयर्स. तो मान लो 100 इयर्स में कितनी लूट चलाई होगी. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बंगाल. These people rule whole India, almost whole India. Right? In addition to this, they also looted the precious wealth of the ancestors of big kings and big kingdoms. Right? मैंने आपको बताया कि policy of annexation and policy of the subsidiary system and all these things. Do you think only their kingdoms were taken over? Even their wealth of their forefathers were also taken over. Understood? ग्वालियर को सिर्फ ऐड नहीं किया था ब्रिटिश ने, ग्वालियर के खजाने को भी ऐड कर दिया था. ऐसा समझ में? So there was an open loot case everywhere, but we were helpless, right? With the help of raw materials produced in India and the money collected from India, the business and industries prospered in England. जैसे मैंने आपको 11th lecture में बताया था, England became richer at the cost of India. There was a reversible flow. पहले वो फ्लो यूरोप से इंडिया था, अभी क्या हुआ? वो फ्लो इंडिया से यूरोप की तरफ बढ़ गया. है समझ में? With the help of these raw materials produced in India and money collected from India, the business and industries of England prospered. Right? Their mills started progressing. Right? Days and nights together because of abundant raw material. Their industries progressed. Right? At a huge
manufactured in India was imported in India about 180% of टैक्सेस भी चाहते थे एंड हमारा जो गुड्स था उस पर 80% ज्यादा टैक्स लगाए जाते थे। तो क्या हुआ कि ये टैक्सेशन के स्ट्रक्चर से उसका जो गुड्स था वो काफी चीप था और हमारे गुड्स काफी कॉस्टली थे। मान लो कि उसका तो 100 रुपीज का गुड्स था, उस पर 5% टैक्स होता था, तो कितना हुआ 105 रुपीज। हमारे गुड्स मैन्युफैक्चर पे 80% टैक्स था, हमारा कितना हुआ 180 रुपीज। नाउ यू टेल मी चिल्ड्रन, the good of same quality and quantity, one is charged 105 rupees, one is charged 180 rupees, what will you pay? 105, 180 कौन पे करेगा? And that is why we were supposed to suffer. So day by day our industries came down, almost closed, right? The Indian handicraft and cottage industry could not stand the competition to sustain themselves. इतनी कंपटीशन हो गई, we could not sustain that competition. Many skill-based industries like cotton, textile, glass, paper, mineral, shipbuilding, etc. got closed down. और उसके जो वर्कर्स थे वो बेकार हो गए। एक समय जो इंडस्ट्री का मालिक था, आज उसको काम ढूंढना पड़ता था। पहले पीसेस को रूइन किया, फिर इंडस्ट्रीज को रूइन किया। ऐसा कुछ नहीं। So lack of skilled workers became unemployed. Gradually, the poor workers became poor in rural areas. So this was destruction of industrial trade and commerce. Now it is our third topic, right? Topic number 3, suspicion about reforms. जो हमारे देश में रिफॉर्म्स थे, वो रिफॉर्म्स इतने बड़े नहीं थे, बराबर? इतने बड़े रिफॉर्म्स नहीं थे, राइट? तो रिफॉर्म्स की वजह से क्या हुआ? पूरे देश में अंधाधुंधी का माहौल हो गया, राइट? क्योंकि मैंने आपको इसके पहले बताया था कि भाई द रेलवे सिस्टम, पोस्टल सिस्टम, सब कुछ इंट्रोड्यूस किया गया था, बट दैट सिस्टम वाज फॉर बेनिफिट ऑफ ब्रिटिश, नॉट फॉर वी पीपल, राइट? वी वर नॉट बेनिफिटेड। At the initial, after starting of 19th century, we were benefited, but we are talking about olden days, right? Suspicion. Suspicion about the reforms. About the reforms. Right? When William Bentinck came to India, the liberal thinking got into reforms. This way, the people started to think slowly. Right? Lord William Bentinck became quite popular because he introduced some good reforms in Indian society. And that is why in history he is called liberal-minded leader. उसको अच्छा माना जाता है, right? India was allowed to use their mother tongue in court of law. पहले इंग्लिश यूज करना पड़ता, हमें पढ़ाई लिखाई भी नहीं आती तो इंग्लिश कहाँ से आता? But he was liberal. He introduced local language in court of law, judiciary. Raja Ram Mohan Roy and social reformers were constantly making efforts to stop the evil practice of sati. Like उस वक्त हमारे समाज में कई सारी बुराइयां थी, बराबर? तो राजा राम मोहन रॉय, he is called a pioneer of modern India. With his help, William Bentinck enacted some law, abolition of sati system, स्टॉपिंग ऑफ दूध पीती से जो लड़कियां को मार देते थे, दहेज प्रथा, वो सब विलियम बेंटिंक ने बंद करवाया था लीगली। With his efforts,
In 1829, sati system was banned. Right? Sati system was banned. उस वक्त क्या था सती सिस्टम में, अगर हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है तो इट वॉज वन वे। कोई लड़की है अपनी हस्बैंड की डेड बॉडी को साथ लेके चिता पे उसको कंपलसरी उसके फैमिली मेंबर्स बिठा देते थे, मतलब उसको चिता जला देते थे। इट वॉज एन एक्ट ऑफ क्रूअल्टी। ऐसे थोड़ी चलता है, हमारी कई बुराइयां थी, आपने पढ़े। और रिवर्स में अगर कोई वाइफ गुजर जाती है, मर जाती है, तो हस्बैंड वाज फ्री टू मैरी अदर मैन। तो ये तो ना इंसाफी हुई। हमने सती सिस्टम के बारे में पढ़ा है, हमने सत्ता सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ा है। हाँ? अगर हस्बैंड गुजर जाते हैं तो वाइफ को सती होना पड़ता था, तो ऐसा नहीं था वाइफ गुजर जाए तो हस्बैंड भी सत्ता हो जाए। अगर ये था तो बिल्कुल सही है, मैं मानता हूं सती के ऑप्शन में सत्ता आ गया, लेकिन ये तो था ही नहीं। So this must be stopped, and it was literally stopped as per law in 1829 with the efforts of Raja Ram Mohan Roy. Okay, children. The company has passed a resolution to spend 1 lakh rupees every year in education, but it was not implemented. बात ने चांद दिखाया था उस वक्त कि हम पूरे साल में, पूरे बंगाल में 1 लाख का खर्चा करेंगे एजुकेशन के लिए, 1 रुपया का भी खर्चा नहीं हुआ। राइट? सी लॉर्ड मेके introduced education, English education in India. Initial introduction of English education was to prepare clerks knowing English. क्योंकि उधर से क्लर्क लाते हिसाब किताब के लिए, वो बहुत कॉस्टली होते हैं, उसको एकोमोडेशन देना पड़ता, हाई सैलरी देनी पड़ती। और अगर इंडिया में से हायर कर ले तो एक आदमी की सैलरी में 50 आदमी इधर से मिल जाएंगे। तो यही करो ना भैया। तो इसीलिए इंग्लिश एजुकेशन जो हम जब इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, वो ब्रिटिश ने अपने बेनिफिट के लिए शुरू किए। चार्ल्स वुड started universities in India, establishment of Mumbai University, Calcutta University, Madras University. Right? So slowly the reformation took place. Education started, awareness came in India. Right? In the year 1834, Lord Mackay thought of introducing English education in India. However, education method was advocated by Mackay could not benefit the youth. मैंने अभी आपको बोला ना, इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस हुआ था लेकिन अपने फायदे के लिए। है समझ में? The method of British education system was opposed by a number of intellectuals, and Mahatma Gandhi called giving a million knowledge of English and staying there. महात्मा गांधी ने तो ये बोला था, taking English knowledge means British की गुलामी हुई। He was against English medium. Right? Later, 3 universities were established in 1857. Right? Besides, British Columbia educated workforce and all these things took place. Remember? So, this was the story of British rule in India. We have studied 3 topics. Topic number 1, social effects on social life. Topic number 2, trade and industry. Topic number 3, suspicion about reforms. बराबर है? तो shall I give my homework? Okay. Take that homework, children. Number 1. How trade and industries suffered during the time of British. Right? Number 2.
social reforms. Were introduced in India at that time. Right? These are the two questions which you are supposed to send in your homework. So with this, we are ending our lecture number 12 of chapter number 6. Now, we'll meet with lecture number 13 of new lesson, new chapter. Till then, children, enjoy yourself, take care, goodbye.